Hi dear friends, welcome back to Abhijitsanamaths. In this video, we are studying the basic concept to find the coordinates of midpoint, or it is called as midpoint formula with an illustrative example. Subscribe Abhijitsanamaths to get more videos. ये वीडियो में हम मिड पॉइंट फार्मूला को समझ लेते हैं और मिड पॉइंट फार्मूला कैसे यूज करना है इसके लिए एक इलस्ट्रेटिव एग्जांपल को समझ लेते हैं। तो कंसीडर करते हैं अ लाइन सेगमेंट ए बी। तो एक लाइन सेगमेंट ए बी कंसीडर करते हैं विथ एंड पॉइंट्स ए एंड बी। ए एंड बी आर द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट ए बी। तो यहाँ सपोज हम ए के कोऑर्डिनेट्स लेते हैं x1, y1। सिमिलरली बी के कोऑर्डिनेट्स हमें लेना पड़ेगा, दैट विल बी x2, y2। सपोज अ पॉइंट इज P which is lying at the midpoint of this segment AB। यहाँ एक P पॉइंट लेते हैं जो AB का क्या है, मिड पॉइंट है। तो ये अगर ये P अगर मिड पॉइंट है, इट मीन्स दैट द AP will be equals to PB। मीन्स ये P के वजह से AB के दो सेक्शंस में इक्वल सेक्शंस में डिवाइड हुए, दैट इज AP equals to PB। नाउ consider that because of this point P, AB is divided into two parts in the ratio m/n, but in this case P is the midpoint, that's why the value of m and value of n are equal। AP is the value of m and PB value is n। Both m and n are equal because this point P is midpoint of AB। ये पॉइंट P मिड पॉइंट है, इसलिए ये AB के पॉइंट P ने दो इक्वल पार्ट्स में डिवीजन किए हैं। तो लेट अस सपोज कंसीडर करते हैं द पॉइंट P हैविंग कोऑर्डिनेट्स x, y। Now there is a relation between all coordinates and this ratio m and n. If we know the coordinates of point A, coordinates of point B, and the value of m and value of n, then we can easily find the coordinate of this point P, that is the value of x and value of y. We know the section formula, that is x equals to m x2 plus n x1 डिवाइडेड बाय m प्लस 1। ये सेक्शन फॉर्मूला का वीडियो हमने बनाया हुआ है, ये वीडियो आपको लिंक इन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चेक लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड फॉर मोर बेसिक कंसेप्ट्स। बट इन दिस केस पॉइंट P इज अ मिड पॉइंट। मिड पॉइंट की वजह से ये AB जो है ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, दैट इज AP एंड PB, और इसका वैल्यू m इक्वल्स टू। तो यहाँ पे केस क्या बनती है, ये दोनों वैल्यूज m और n की सेम है, दैट इज m इक्वल्स टू n। देयरफॉर ऑन सॉल्विंग दिस x एज इट इज इक्वल्स टू m आल्सो एज इट इज, x2 एज इट इज प्लस n और m का वैल्यू इक्वल है तो n के जगह हम m पुट कर सकते हैं एंड x1 एज इट इज डिवाइडेड बाय दैट m प्लस n का वैल्यू और m का वैल्यू सेम होने की वजह से यहाँ पे हम m पुट कर देते हैं। ऑन सॉल्विंग दिस, यहाँ पे देखिए this m is common in both, by taking this m common here outside, here x1 will remaining x2 will remaining plus here x1 will remaining x1 divided by m plus m, that will be twice of m। Now this m is in numerator and in denominator it will be cancelled and we get x2 plus x1, this is x1 divided by 2। It means that x1 plus x2 divided by 2। It means if we know the coordinates of point A and coordinates of point B, by adding x1 and x2, by taking an average of this, we can easily find the coordinate x, which is the x coordinate of this midpoint P। Similarly हम पॉइंट y को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय सेक्शन फार्मूला। y का वैल्यू दैट विल बी इक्वल्स टू m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये सेक्शन फार्मूला के यूज से हम y का वैल्यू निकाल सकते हैं। नाउ हियर y, बट हियर द केस इज m इक्वल्स टू n बिकॉज p इज अ मिड पॉइंट। तो यहाँ पे y इक्वल्स टू m एज इट इज,
y2 also as it is, plus the value of this n and this m is equal. Therefore put m instead of this n because both values are equal. m y1 divided by m plus n के जगह पे भी सेम हमें m लिख सकते हैं. That will be equals to, now this m is common in both. By taking m outside, here y2 plus y1 divided by this m plus m, that will be twice of m. Similarly, m and m will be get cancelled, and here we get y2 plus y1 divided by 2, which we can write as y1 plus y2 divided by 2. तो ये जो वैल्यू मिला है हमें y1 plus y2, ये है ये y का वैल्यू. देयरफॉर हमें ये p के कोऑर्डिनेट दैट इज x, y मिले हैं. दैट विल वी कैन राइट इट एज p. अभी x का वैल्यू जो है हमें यहाँ पे मिला है x1 प्लस x2, मीन्स यहाँ पे x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2. ये x कोऑर्डिनेट हो गया p का. सिमिलरली हमें ये y कोऑर्डिनेट मिला है दैट इज y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2. तो ये हम इस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं. चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. ये फॉर्मूला अच्छे से समझने के लिए हम एक इलस्ट्रेटिव प्रॉब्लम लेते हैं. कमिंग टू एन इलस्ट्रेटिव प्रॉब्लम, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P if P is a midpoint of a line segment AB with A having coordinates -4, 2 and B having coordinates 6, 2. Now consider a line segment AB which having endpoints as A and B. A having coordinates -4, 2 and B having coordinates 6, 2. Here P is the midpoint of line. Suppose that P is here, and because of this P, this AB is divided in two equal parts. Now here AP equals to PB, means this point P is a midpoint of this segment AB. तो यहाँ हम मिड पॉइंट फॉर्मूला जो हमने इसके बिफोर कैलकुलेट किया था उसका यूज कर सकते हैं, और ये पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट वी कैन इजीली फाइंड इट. दिस विल बी द x1, this will be the y1, sorry, this will be y1, this will be the value of y1. Here this will become x2 and this will become y2. Now by using this we can easily calculate by using midpoint formula. यहाँ means x1 का वैल्यू होता है यहाँ -4, y1 का वैल्यू होता है यहाँ पे 2. सिमिलरली यहाँ पे x2 हमें मिल जाएगा, x2 will be equals to ये 6, और ये y2 हमें मिलता है यहाँ पे 2. तो यहाँ कॉमा दे देते हैं, सेपरेट टू वैल्यूज है. मिड पॉइंट फार्मूला हम जानते हैं जो हमने अर्लियर डिस्कस किया हुआ है, दैट इज x कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2. तो दैट x will be equals to the value of x1 is here -4, put -4 instead of this x1, plus as it is the value of x2 we have here that is 6, put 6 here divided by 2. Now that will be equals to x equals to -4 plus 6, that will be equals to 2 divided by 2. Now here 2 and 2 get cancelled, one times we get the value of x equals to 1. Similarly find the value of y. Here by the midpoint formula y is equals to y1 plus y2 divided by 2. Now that will be equals to the value of y1 here we get is 2, put 2 instead of this y1, plus the value of y2 we get is here 2, put 2 instead of this y2 divided by this 2 as it is equals to 2 plus 2 that is 4 divided by 2. 2 1s are 2, 2 2s are 4. We get 2 times the value of y we get is this 2, and the value of x we get is 1. Therefore that P having coordinate x, y will be equals to P having coordinate 1 the value of x and 2 the value of y. Do like, share and subscribe Abhijitsanamaths to get more mathematics, physics, computer science, coding and English videos.